Assalamu alaikum, good afternoon, and a very warm welcome to all of you. It's time to begin our 9th session for this 1-week training program on research methodology and innovative statistical application, organized by Department of Architecture, Aligarh Muslim University. For this session of this 1-week training program, it is our fortune to welcome once again Dr. Haseeb Athar, Sir, Department of Statistics, Aligarh Muslim University, as the resource person for the session titled Application of SPSS in Research. Professor Haseeb Athar sir has already shared his remarkable knowledge in the 8th session. I extend my hearty welcome to you, sir, again, and request you to provide us with your enlightening insights. अस्सलाम वालेकुम. हेलो आवाज़ आ रही? So in continuation to my yesterday lecture, today I will the first take the comparison of means. Yesterday I dealt with the t-test and we compared two populations. So in continuation to that, today just first I will demonstrate how to compare more than two means. That is a one-way ANOVA. And with reference to the same data file which I shown you yesterday, and I will take up the same data file and using that data file, and will state some problems, and those problems will be analyzed. And some case study will also be discussed today. So here first see here one-way ANOVA. Actually, up to now we compared two means. In our data file, there were the two variable like that gender, and after some variables, categorical variables were the monthly income and locality like that. Okay. So if there are only two groups, so t-test can be used easily to compare means of the two population. I told you yesterday, here we observe some difference in the mean, and actually we want to check whether this difference is also existing in that population or not. So we want to check significance of difference in the population, not only in the sample. So here in our data file, we created the health data file, and there are three categorical variables. One is gender, one is the monthly income, then locality. All these are the categorical variables. So when there are more than two population or more than two groups, so t-test can be used, but you have to test like that. We have to compare first with second, second with third, third with second, like that, one with first. So, and also it will be very difficult to make the multiple comparison. So your analysis will be so long. So it will take time, and also result will not be very good. So what we'll do, we use the one-way analysis of variance. Full form of this ANOVA is one-way analysis of variance, and this is used for the multiple comparison. That means more than two means. So problem is stated like that in reference to the health data file. Suppose the researcher wish to test is there any difference in the mean health score of people belonging to different income groups. Okay. So first question is that suppose you observe there is some difference in mean health score with respect to the different income group. So under H0, actually H0 we say like hypothesis of no difference. Okay. So under H0 we will state like that there is no any significant difference between mean health of people belonging to the different income groups. Okay. But
When H naught will be rejected, when H naught will be accepted, there is no problem. That means all the means are same. But when H naught will be rejected, so now there is need of multiple comparison also. So here H naught will be written like that. At least any two of the means differ significantly, because of population 1 and population 2 may be same, but population 1 and population 3 may be different. Similarly, population 2nd and population 4th may be different. So some groups may be same and some group may be different. So that's why here H1 is written like that. At least one of mu I is different. Okay. So this is the initial step, and it is a very crucial step. Unless until you are not stating your hypothesis correctly, your analysis will not be correct. क्योंकि आपने हाइपोथेसिस ही गलत कर दी शुरू में. अक्सर मैं देखता हूँ कि जैसे कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसी को ले लिया नल हाइपोथेसिस. तो ऑलवेज रिमेंबर, null hypothesis means hypothesis of no difference. Whatever your research question, that will be stated under H1, and against contrast to that, null hypothesis will be written. Okay. So here I will demonstrate the procedure how to analyze this. Okay. See here the health data file, and here you want to compare mean of 4 population groups. So here again assumption will be same. Observation should be independently taken from the population, and second one is that all the 4 groups must be approximately normally distributed. So first what we'll do, we'll check the normality of 4 income groups. But in our this data file is a combined data file. First we'll split this data file into 4 groups. It will be internally splitted. It will not shown here, but when I'll perform that command, this data file will be internally split. So see here what we'll do first. Press select data, and this option split file. We want to split this data file on the basis of income group. So we'll select monthly income here and organize output by groups and move this into this box, and then OK. Now we'll check the normality of all the 4 income groups. Yesterday I told you how to check the normality, and 4 procedures I discussed. One is the histogram with normal curve, another one was the skewness and kurtosis, third one was the Throth test, Kolmogorov spin-out test, and other was Satyriga-Wilk test, and fourth one was the QQ plot. So here I will consider only the first one, histogram with normal curve, and through that we can check whether all the 4 groups are approximately normally distributed or not. Okay. So here analyze descriptive statistics and frequencies, and move this health score in this window, and after that select on charts and press histogram with normal curve, and then OK, and you unclick this frequency table. Just you want to check the normality. So see here. So income group from 500,000 to 10,000 like that, and some income groups are also here below 5,000 like that, and it is not exactly normal, but we can say this is approximately normal. I told you exactly you will never get the normally distributed data. So you can say the data is, this group is approximately normal. Similarly with another group 5,000, 10,000, this is also approximately normal, you can say. Then 10,000, 25,000, this is positively skewed. Problem इसमें है थोड़ा, वो तो थोड़ा सा, but this group is positively skewed, बहुत ज़्यादा skewed हो रहा है, ठीक है. But I'll carry our analysis.
and this group is also skewed, but our analysis will be carried क्योंकि हमको demonstrate करना है, so otherwise we'll use the non-parametric test, but here just I want to demonstrate how to use the parametric test one-way ANOVA here. So after just checking whether data is normally distributed or not, again we'll reset before analysis, otherwise result will not be displayed because we already broken this file into 4 parts, that means on the basis of different income group. So here data split file, and again analyze all cases, or you can press on reset and then OK. Now come on to the analyze and compare means. Now select the compare means and then select one-way ANOVA. Okay. And dependent list is you want to compare means of 4 income group. So dependent variable is, or dependent list is health score. And what is the factor? Factor is the monthly income. Remove the monthly income here. Okay. Now there are some options. You just click on the post hoc. Actually, initially in this first table, ANOVA table, it will show whether model is significant or not on the basis of p-value. If model is significant, then multiple comparison will be done on the basis of analysis mean or p-value. Here first group will be compared with the second group, first with the third group, like that. So here several options here, but Tukey test can be applied most of the cases, so I'll select here Tukey test for multiple comparison. Okay, and continue. And here click on options. Here some statistics are given. Here we want to test homogeneity of variance test, because this is also one of the assumptions that population variances should be same. So we may click here homogeneity of variance test here. Okay. Now continue and OK. Now interpretation is very important for all these outputs. Analysis में वहाँ तो सॉफ्टवेयर से बटन दबा दिया आपने, सब कुछ आ गया, ठीक है. बेसिक प्रॉब्लम कहाँ होती है? When you write your result, whatever SPSS displayed, there are so many things. Some results are useless for you. So we'll extract useful things from that output. So first table shows test of homogeneity of variance. Okay. Through this, we can identify whether the population variances for all the 4 groups are same or not. Okay. So what would be our null hypothesis? Null hypothesis will be like that: all the 4 population variances are same. That means if your sigma square is the population variance, so we may write under there's a pen. Okay, no problem. So all the 4 population variances are same, and versus that H naught will write they are not same. Okay. So I told you on the basis of p-value, if p-value is greater than alpha, then H naught will be accepted. That means population variances are same. If p-value is less than or equal to alpha, then population variances are not same. Most of the cases we try to reject null hypothesis. Most of the cases we try to reject null hypothesis because our question is stated under H1. But here we want to accept null hypothesis because under null hypothesis we stated that all the 4 population variances are same. So here first we will check what is the p-value, and p-value based on mean, median, several statistics are given. But here first we will consider only the first row, and p-value is 0.862. P-value is significant value is the p-value. P-value is 0.862. If we fix alpha 5%, that means 0.05. So here p-value is greater than alpha. So H naught will be accepted. That means variances of 4 the groups are same. Okay. So
one of the basic assumptions for applying this one way ANOVA is also fulfilled. Initially, we checked the normality of the data. Observations are taken randomly. We assume that. And third assumption, population variances should be same. This is also checked. Now come on to the second table, ANOVA table. And here, see, this table shows overall significance of the model. And here p-value is 0.000. That means this model is highly significant. That means this is useful model for your data. Okay. So p-value is 0.000. That means your null hypothesis, whatever you stated earlier, that will be rejected. P-value is 0.000. 0.000. So hypothesis will be accepted. जरा जल्दी से मुझे बताओ तो फिर मैं समझूंगा. है एक्सेप्ट होगा. मैंने बताया था कि रूल जो है, इफ p इज लेस देन इक्वल टू अल्फा देन रिजेक्ट एच नॉट. अब इससे पहले केस में अल्फा दैट वाइज एच नॉट, बट हियर p इज लेस देन इक्वल टू अल्फा. ये हमें चीज है. On the basis of that, we may reject or accept null hypothesis. The rule is that if significant value, that is p value, is less than equal to alpha, then reject h naught. And obviously, when p is greater than alpha, h naught will be accepted. ठीक है? So, अगर null hypothesis group h naught will be rejected. H naught will be rejected. That means at least one of the means are differ from other. ठीक है. तो अब यहाँ पर ये बात तो तय हो गई कि मीन्स डिफर कर रहे हैं. नाउ विल कम ऑन टू द मल्टीपल कंपैरिजन कि कौन सा ग्रुप किससे डिफर कर रहा है, कौन सा किससे नहीं डिफर कर रहा है. दिस इज कॉल्ड द पोस्ट हॉक टेस्ट for multiple comparison, and we opted the Tuckett test for multiple comparison. And here see, in first row, base is taken 5,000 rupees, and this is one group. This group is compared with the 5,000 to 10,000 group, 10,000 to 15,000 group, like the 25,000 group, and above 25,000 group. So this first group is compared with the other groups. How will check whether first group is different from other groups or not? So you just notice in the 1, 2, 3, 4, 5th column, here significant are in column mean difference is given. That means mean of the below 2,000, 5,000 group and mean of the 5,000 to 10,000 group, difference of that is written there. Similarly, below 2,000, 5,000 and 10,000, 25,000 mean difference of these two groups are written in the third column. So we don't need this column. We just want to check 5th column, that is significant column. So see here in the first row, significant value is 0.001. So this is the p value, and your alpha is 0.05. So this p value is less than or equal to alpha. So below 5,000 group and 5,000 to 10,000 group are differ significantly. क्योंकि अगर लेस है तो एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है. यहाँ पर हम इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे कि अगर लेस है तो डिफरेंट है और ग्रेटर है तो डिफरेंट नहीं है यहाँ पर. ठीक है. तो ये दो ग्रुप का अगर देखें सिग्निफिकेंट वैल्यू तो वो क्या है 0.001. दैट मीन्स ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 डिफर सिग्निफिकेंटली. Now come on to the group number 1 and group number 3. What is the significant value? 0.000. That means first group is also different from the third group. ठीक है ना? Mean health score of people from the first group is differ significantly from the third group. Similarly, first group and fourth group. Again, p value is 0.001. That means first group is also different from the fourth group. Differ significantly from the fourth group. So
Now we just checked first group is different from second, third, and fourth group. But here comparison is not carried out second and third group, second and fourth group like that. So in the next row, 5,000 to 10,000 is taken as a base, and group comparison is done. So 5,000 to 10,000 is compared with the below 5,000. So it is not needed because already we done this one here, because we compared this 5,000 below 5,000 to 5,000 to 10,000. This is in the reverse. उसको बाद में ले लिया, रिजल्ट तो वही आएगा, चाहे ए टू बी का कंपेयर करें, बी टू ए का करें, तो उसको स्किप कर जाए. नाउ चेक this group with this group, because 5,000 to 10,000 is not compared with 10,000 to 25,000. So if you see against that, what is the p value? कितना है p value? 0.983. So this p is greater than alpha. So this group and this group are same. There is no any significant difference. अगर लेस होता है तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है जो है, ठीक है. बट पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा, दो. सो 5,000 to 10,000 ग्रुप एंड 10,000 to 25,000 ग्रुप आर सेम विद रिस्पेक्ट टू द मीन हेल्थ स्कोर, या मीन ऑफ दिस टू ग्रुप्स आर सेम, ठीक है. अगेन चेक 5,000 to 10,000 ग्रुप विथ above 25,000 group. So p value is 1. Again this is greater than alpha. So these two groups are again same. So there is no any significant difference between 5,000 to 10,000 group and above 25,000 group. Okay. Now on to the next group, because we not compared this group, two groups. So base is 10,000 to 25,000 group, and this already done, this already done. Now this and this. So see the significance value, that is 0.979. So again p value is greater than alpha. So there is no any significant difference between first group and 10,000 to 25,000 group and above 25,000 group. So these two groups are also same. So finally we can अब फिर इसी को रिवर्स में कर लिया गया है लास्ट कॉल रो में. Finally we can observe that only first group is different from second, third and fourth group. Second and third, second and fourth, third and fourth groups are same. तो आप देखिएगा नेक्स्ट टेबल में जो सबसेट बनाया है SPSS ने, पर जो विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट इनकम ग्रुप सबसेट जो बना है, फर्स्ट ग्रुप इज डिफरेंट एंड दिस थ्री ग्रुप्स आर सेम. तो फाइनल हमारा रिजल्ट जो आ रहा है जो है कि व्हेन वी आर कंपेयरिंग फोर इनकम ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू देयर हेल्थ स्कोर, so first group is entirely different from second, third and fourth, but second, third, second, fourth, third, fourth are same. ठीक है. तो इस तरह से फाइनल कंक्लूजन निकलेगा. So this is analysis of one way ANOVA, and when you compare, अब जैसे आप जिस फील्ड के भी हैं, जिस चाहे आप बायोलॉजिकल साइंसेज के हो चाहे फिजिकल साइंसेज के हो, तो आपकी प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को इस प्रॉब्लम में ट्रांसफॉर्म करके आप चेक कर सकते. कभी कभी आपको आता है कि, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो ऑब्जर्वेशन शुड बी ऑन स्केल. कोई कैटेगरिकल डाटा का मीन का कंपेरिजन नहीं करेंगे यहाँ पर. इस आपका न्यूमेरिकल डाटा होना चाहिए, जो जैसे हेल्थ स्कोर था दैट इज स्केल वेरिएबल्स है. तो अगर जैसे स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, जैसे आप मतलब अगर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में खड़ा हूँ तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ लोग आर्किटेक्चर पे ही होंगे, मुझे नहीं मालूम और किस डिसिप्लिन का है. मान लीजिए कि आप जो है किसी उसका जो है स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए सीमेंट की कंपनी का जो है, तो अलग अलग जगह पर उसको लगा रहे हैं. तो मीन स्ट्रेंथ उसका कंपेयर करना, तो उस प्रॉब्लम को इसी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. मैं एक दूसरा प्रॉब्लम भी आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं, तो वो ज़्यादा आपको एप्लीकेबल लगेगा आपके केस में. अब देखिए, एक एग्रीकल्चर साइंसेज में जैसे एक प्रॉब्लम है
Here a farmer wants to know out of 3 available fertilizers, आप अपने उसमें ट्रांसफॉर्म कर दीजिए जो भी आपको है, 3 टाइप्स ऑफ जो सीमेंट या जो भी मटेरियल है, ठीक है, which one is the best for parsley plant? He used each fertilizer in 3 different plots, each having 30 plants, and weight of these plants after 6 weeks are recorded. Data is available in the given table. So there are 3 plots, plot number 1, 2, 3, and 3 types of fertilizers are also available. So what he did, he applied fertilizer number 1, that is the organic, suppose organic fertilizer. Second one is the biological fertilizer. Third one is the chemical. So in plot number 1, he used the organic, biological, and the chemical fertilizer. And after applying this fertilizer, after a week or 1 month, weight of the plants are recorded in this table. So he wants to check, is there any significant difference between the mean weight of plants with respect to different plots. So on the under H naught, what will state? All the 3 fertilizer, effect of all the 3 fertilizers are same. ये तो हमने लिखा mu1 equal to mu2 equal to mu3. There is no any significant difference between all these 3 fertilizers versus H1. At least any 2 of them are different. Means fertilizer 1 may be different from fertilizer 2, fertilizer 1 may be different from fertilizer 3, and 2 may be different from 3. So you can easily check this. अब देखिए डेटा कैसे फीड करेंगे. एक ये भी एक प्रॉब्लम आती है अक्सर आपके साथ. प्रॉब्लम सब कुछ आपको मालूम है, बट स्प्रेडशीट में डेटा जो फीड करना है उसको फीड करना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर सही से नहीं फीड होगा तो वो एनालिसिस का रिजल्ट गलत हो जाएगा फिर. ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था. हियर प्लॉट नंबर हमने लिखा, पहला हमने जो वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, वी डिफाइंड द प्लॉट नंबर. प्लांट आईडी, प्लांट आईडी में से if plant is in plot number 1, first plant I have given the plant ID 101, plant second plant in the plot number 1 102, like that. And fertilizer according to the plant plot number, in plot number 1 fertilizer number 1 is used, that is the organic and biological and chemical. We can display this fertilizer type also. वो कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखें व्यू में जाएंगे और यहाँ पर अगर कर दें वैल्यू लेबल इस तरह से, ये डिस्प्ले भी होने लगेगा जो है किस तरह का फर्टिलाइजर आप यूज कर रहे हैं. तो जो कोडिंग आपने किया 1 2 3 दैट विल बी डिस्प्लेड हियर. तो इसको दोबारा आप वापस भी कर सकते हैं. 1 2 3 व्यू में जाएंगे और वैल्यू लेवल पे दोबारा क्लिक कर दें. ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज. तो हमने फीडिंग जो डेटा की इस तरह से की है. प्लॉट नंबर, प्लांट आईडी, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर एंड प्लॉट नंबर आर सेम, लाइक दैट. एंड देन फाइनली वेट ऑफ द प्लांट. ठीक है, in plot number 1, plot number 2, plot number 3, like this. Now again we'll repeat the same procedure. और अच्छा यहाँ पर भी नॉर्मलिटी चेक करेंगे. जो 3 प्लॉट्स के जो प्लांट्स का वेट हमने कलेक्ट किया है, फर्स्ट विल चेक द नॉर्मलिटी. तो हम उसको रिपीट नहीं कर रहे, ऑलरेडी आई शोन यू हाउ टू चेक द नॉर्मलिटी ऑफ डेटा. सपोज आई अज्यूम दैट वेट ऑफ द प्लांट्स इन डिफरेंट प्लॉट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. वी जस्ट अज्यूम दैट. ठीक है, नाउ analyze, compare means, one way ANOVA. डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका, जल्दी से बताएं क्या है? नहीं, प्लांट्स नहीं होगा, वेट होगा. वेट को तो चेक कर रहे हैं, मीन वेट तो चेक कर रहे हैं. तो ये जरा सा आपको ये सारी चीजें मैंने इसीलिए बार बार आपसे पूछता हूँ कि जो चीज है वो क्लियर होनी चाहिए. अगर आप प्लांट डाल देंगे तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा. एक्चुअली वांट टू चेक मीन वेट ऑफ प्लांट्स इन डिफरेंट प्लॉट्स आर सेम और नॉट विद रिस्पेक्ट टू फर्टिलाइजर यूज्ड. ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, वेट इन ग्राम्स हो गया. ठीक है, फैक्टर्स क्या है, फर्टिलाइजर. वेरी गुड, फर्टिलाइजर यूज. ठीक, नाउ अगेन टेक द टुकी टेस्ट फॉर मल्टीपल कंपेरिजन एंड option
descriptive you can select, homogeneity test of our variance, and then OK. See here, all the results are here, and you see then the first test of homogeneity of variance. So in the first row, p value is 0.596, that is greater than alpha. So all the three populations are variance of all the three populations are same, because under H naught we stated that sigma 1 square is equal to sigma 2 square is equal to sigma 3 square. That is population variances for the three populations. Here three population means three plots. So all the three variances of all the three populations are same. Now come on to the ANOVA. Significant value is 0.028. That means this model is significant. That means effect of fertilizers differ significantly. है ना, क्योंकि अगर H naught हमारा accept हो जाएगा तो there is no significant difference between these fertilizers. But here H naught is rejected. That means fertilizers differ significantly with respect to weight of plants. ठीक है, अब डिफर हो गया. अगर ये एक्सेप्ट हो जाता H naught तो कौन सा फर्टिलाइजर यूज करते, कोई बता सकता है? एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा. दो चीज है, प्लांट जो आप में जो है फर्टिलाइजर यूज करना है, अभी तो हम चेक कर रहे हैं कौन किसका इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो दैट फर्टिलाइजर विल बी प्रिफर्ड. ठीक है, फर्टिलाइजर चाहे ऑर्गेनिक हो, बायोलॉजिकल है कि केमिकल है, मीन वेट एंड सिग्निफिकेंट जिसका रिजल्ट ज्यादा होगा दैट फर्टिलाइजर विल बी प्रिफर्ड. ठीक है, बट इफ H naught is accepted, when which fertilizer will be used? Anyone? लेकिन anyone में किसको यूज करेंगे? कॉस्ट कम होगी. कोई एक अमेरिका का प्रोडक्ट है, कोई इंडियन प्रोडक्ट है, मतलब तीन जगह प्रोडक्ट है, एक रुपीज मिल रहा है, $1 मिल रहा है, तो सस्ता वाला यूज करेंगे, इफेक्ट तो बराबर आ रहा है. मैंने इसीलिए पूछा जो है. तो अब यहाँ पर देखिए, मल्टीपल कंपैरिजन में जाएंगे तो ऑर्गेनिक का कंपैरिजन है बायोलॉजिकल से एंड ऑर्गेनिक का कंपैरिजन है केमिकल से. सो पी वैल्यू व्हेन वी कंपेयर ऑर्गेनिक विद द बायोलॉजिकल, पी वैल्यू इज 0.486. so there is no significant difference between organic fertilizer and biological fertilizer. But when we compare organic fertilizer with the chemical fertilizer, p value is 0.021. That means there is significant difference between mean weight of plants with respect to organic fertilizer and chemical fertilizer. But now we want to compare biological with chemical. Up to now we didn't compare biological and chemical. So base is biological. Now we are comparing it with the chemical. Organic we already done. So here p value is 0.262. 0.262. So biological fertilizer and chemical fertilizer are same. There is no significant difference. So organic is different from the chemical, but biological and chemical are same. So subset देखिए यहाँ पर फ्रेम हुआ होगा, organic and biological are same and biological and chemical are same. So here subsets are formed like this. So in this way you can apply your problem, you can transfer your problem in this problem. तो जैसे मैंने बताया कि अगर मटेरियल के स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो उसको अलग अलग जगह पर लगा के उनका मीन स्ट्रेंथ आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, नाउ कम ऑन टू द टू वे एनोवा. अच्छा, इसी में एक चीज और हम यहाँ पर और आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं कि वन वे एनोवा विथ रिपीटेड मेजर. वन वे एनोवा विथ रिपीटेड मेजर. रिपीटेड मेजर का क्या मतलब है कि जैसे अभी मैंने जो एक्सपेरिमेंट लिया कि 3 प्लॉट्स में 3 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर यूज किया. एक तो हमने वेट रिकॉर्ड किया बिफोर अप्लाइंग द फर्टिलाइजर, 0 वीक में. 0 वीक में उन प्लांट्स के वेट हमने रिकॉर्ड किया और फर्टिलाइजर यूज किया एंड आफ्टर 3 वीक्स उसका वेट रिकॉर्ड किया. दैट मीन्स सेम सेट ऑफ प्लांट विल बी यूज्ड. ऐसा नहीं कि बाद में हम दूसरे सेट ऑफ प्लांट्स का वेट रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो सेम सेट ऑफ प्लांट्स विल बी कंसिडर्ड अगेन. आफ्टर 3 वीक्स
weight will be recorded, and again after 6 weeks weights will be recorded. तो weight जो है एक interval पे record कर रहे हैं, that is called one way ANOVA with repeated measure. ठीक है, तो उसमें कभी होता है कि जैसे कि आपके केस में अगर हम देखें कि कंस्ट्रक्शन के बाद जो है 1 वीक में स्ट्रेंथ चेक कर लिया आपने, जो भी आपका प्रोसीजर है, आफ्टर 2 वीक्स 3 वीक चेक किया, ये जो पानी डालते हैं कुछ करते हैं, उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ कितनी हुई, फिर 1 मंथ बाद उसकी स्ट्रेंथ चेक की, तो क्या आपके जो जैसे एक लोकल लैंग्वेज तराई जो कहलाती है, उससे क्या उसका स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो वो आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं इस तरह से कि लास्ट वाले में हमारी बहुत स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई, यानी कि उसका इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। तो अब ये देखिए जो आपकी डेटा की फीडिंग जो है इस तरह से होगी। अब यहाँ पर जो assumptions है वो तो रहेंगे ही, independent observation should be taken independently and normality condition should be also be satisfied, जो ग्रुप्स बनेंगे उसके नॉर्मेलिटी भी चेक करेंगे। थर्ड वन इज स्पेसिफिसिटी and mostly test for sphericity will be used. That is nothing but in the case of repeated measure, homogeneity of variance will be tested through this. Okay, so all the assumptions are same, but there we use the Leven's test for homogeneity of variance, but here mostly test for homogeneity of variance will be displayed. Okay, and hypothesis will be like this: means of all possible groups are equal. यहाँ possible groups क्या है? With respect to time. 0 वीक पर, 1st वीक पर, 3rd वीक पर फर्टिलाइजर्स आपने यूज किया है। अब ऑल द 3 फर्टिलाइजर्स का इफेक्ट हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेक कर रहे हैं, रिपीटेड मेजर, क्योंकि हमारा जो है जैसे हमने बताया था पेयर टी टेस्ट, सेम सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हमने बिफोर लिया था, आफ्टर लिया था, तो इसी तरह यहाँ उनका इफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेक कर रहे हैं कि 0 वीक पर, 1st वीक पर, 3rd वीक पर उनके जो है वेट्स जो है सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है कि नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, एनालिसिस से पहले फाइल को स्प्लिट कर देंगे 3 पार्ट्स में, फर्टिलाइजर नंबर 1, 2, 3 तीनों का अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। और ये देखिए जो है 0 वीक में ये रिकॉर्ड किया गया ऑब्जर्वेशन है, और सेम थिंग आफ्टर 3 वीक्स रिकॉर्ड किया गया सेम पैटर्न पर, एंड आफ्टर 6 वीक अगेन डेटा इज रिकॉर्डेड लाइक दिस, ठीक है। तो योर हाइपोथेसिस प्रॉब्लम इज स्टेटेड लाइक दैट, इन विच वीक मीन वेट ऑफ प्लांट्स इज मैक्सिमम फॉर ईच फर्टिलाइजर, एक प्रॉब्लम ये है। सेकेंड, इज मीन वेट प्लांट डिफर सिग्निफिकेंटली इन डिफरेंट वीक्स विथ ईच फर्टिलाइजर, तो मीन वेट ऑफ फर्टिलाइजर 0 वीक पर फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे हैं, और आफ्टर 3 वीक्स इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीन वेट ऑफ प्लांट, 0 वीक में, 3rd वीक में, 6th वीक में ये डिफरेंट है कि नहीं, ठीक है। तो ये 2 प्रॉब्लम्स हैं, इसको जो केस स्टडी है इसको हमको डिस्कस करना है, कैसे हम एनालाइज करेंगे। अब डेटा देखिए कैसे फीड कर रहे हैं यहाँ पर। अब 0 जैसे पहले किया था उसी तरह कर रहे हैं, सब कुछ उसी तरह है, बट यहाँ पर जो लिख रहे थे, तो 0 वीक, 1, 3 वीक एंड 6 वीक 3 स्केल वेरिएबल्स हमने क्रिएट किया है, ठीक है। और डेटा विल बी फेड लाइक दिस, आफ्टर दैट विल परफॉर्म लाइक दिस, एंड डेटा स्प्लिट फाइल, ओके, एंड ऑर्गेनाइज्ड आउटपुट बाय ग्रुप्स। तो ग्रुपिंग हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजर यूज, तो तीनों फर्टिलाइजर का अलग अलग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फर्टिलाइजर यूज विल बी मूव्ड हियर एंड ओके। See here command will be little bit different from the one way ANOVA like that. So analyze, command is analyze, then general linear model, instead of taking comparing mean we'll select now general linear model, and here repeated measure. Now within subject factor is now time, with respect to time we want to compare the
mean weight of the plant. So here we'll delete this factor 1 and we'll type here time. Okay. Label of the factor is 3 because 0 and 3 weeks and 6 weeks. So label is 3 label of factors, and we'll add here. So time 3, that means 0 weeks, 3 weeks and 6 weeks. Measurement name is we are want to check the weight. We write here weight like this, and here we'll add here. Okay. Now define weight on the 0 week. Move here, week 0, weight 1. Weight 1 means on weight on week 0. After 3 weeks, weight 2, weight after 2 weeks or 3 weeks, sorry. And third one, weight 3, that means weight after 6 weeks. Now here some options will be selected. First click on model, and here full factorial is displayed, so no need to select anything, just continue here. And contrast, nothing is to be done here. Now come on the plot and move time in the horizontal line and click on add and continue. Now post hoc, will see here there is nothing, so no need to select anything in the post hoc test, just continue this. Now select EM means, that means estimated marginal means, and we'll select time here and move this in the display mean for. Now click on compare mean effect. स्टेप याद रहेगा? इसमें जो लिखा मैं दे दूंगा क्योंकि वो एकदम से याद तो नहीं होगा. मैंने कुछ लिख रखा है, तो लेकिन उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी. ठीक है. तो select compare mean effect, main effect, and here confidence interval adjustment, take the Bonferroni. Select here this one and continue. Now select on save option, and here nothing is to be selected, and finally select on option, and here you can select descriptive statistics and estimates of size effects. Here only we need two options, descriptive statistics and estimates of size effects. You can select some other options also, homogeneity test, like that, homogeneity of variance. It will be already displayed in the output. Then continue and then OK. So see here, first fertilizer is organic fertilizer, and here table for descriptive statistics given, and mean weight in 0 week, 3 week and 6 weeks are given, along with the standard deviation and number of plants in each plots. So here mean weight after 6 weeks are maximum, you can observe easily. Okay. So first question is replied here. Answer of first question is given. That means mean weight after 6 weeks is maximum. Now multivariate test, nothing is to be done with this table. Come on to the Moseley test for specificity. This is nothing but the equality of variance test. If you see here, significant value is 0.000. That means H0 will be rejected. H0 will be rejected. That means population variances are not same. Variances of the 4 group are not same. So here, next column you see greenhouse geyser. It's written that, and significant value is given 0.533. So using that you can say population variances are same, because here 0.533 greenhouse geyser. So when we come here, since we selected here greenhouse geyser, so also we see here with respect to time p value against the greenhouse geyser. So this is the 0.000. 0.000, p value is 0.000. That means mean effect, mean weight of plants with respect to time differ significantly. क्योंकि p value यहाँ पर 0.000, that is less than 0.05, that means differ significantly.
This is overall significance of the model. P value is 0.000. That means model is significant model. Or these are the estimated values. Estimated means for a model means are estimated. And here this one is the important one, pairwise comparison. We did earlier. Means time 1 is compared with the time 2. That means 0 week weight is compared with the 3 weeks weight. And 0.000. That means value is significant value. That means weight of plants in the 0 week is differs significantly with the after the 3 weeks. Similarly, mean weight of plants in the 0 week differs significantly in the 6th week. Similarly, second week is compared with the first week already done in the first row. Second, when we compare the second week with the third week, also p value is 0.000. That means second week mean weight of plants in the second week differs significantly in the mean weight in the sixth week. So in this way we can compare. Now see here. Similarly, same output are displayed for the biological fertilizer and for the chemical fertilizer, and interpretation will be very much same like that. Okay. Any question? इसमें कुछ ऐसा तो नहीं confusion हो? अभी क्लियर के बाद में याद नहीं रहेगा ना. अगर कोई चीज ऐसी लग रही है जो उसमें ऑनलाइन पार्टिसिपेंट से भी आप पूछ सकते हैं. है कोई क्वेश्चन आपके पास है? ये समझ में आ गया? कहने का मकसद ये है कि विद रिस्पेक्ट रिपीटेड मेजर के उसमें कर रहे हैं. 3 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर है. विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंपेरिजन कर सेम जो है प्लांट जो है हम इंडिविजुअल्स कह सकते हैं, उसी को 0 वीक में ले रहे हैं, आफ्टर 3 वीक्स, आफ्टर 6 वीक्स, एंड मीन वेट आर कंपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो और 3 फर्टिलाइजर का आउटपुट जो आ रहा है उसी तरह इंटरप्रिटेशन तीनों का होगा. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. Now come on to the two-way analysis of variance. Two-way analysis of variance we just seen here. Now suppose data is classified in two way. जैसे अभी हमने हेल्थ डेटा फाइल को अगर हम कंसीडर करें, सपोज वी एट ए टाइम वी वांट टू कंपेयर मीन हेल्थ स्कोर विद रिस्पेक्ट टू द मंथली इनकम एज वेल एज द लोकेलिटी. अलग अलग कर सकते हैं दोनों का, 2 बार करना पड़ेगा एनालिसिस. एट ए टाइम दोनों को करना. साथ में वी वांट टू चेक द इंटरेक्शन इफेक्ट. इंटरेक्शन इफेक्ट मीन्स व्हेन वी इंटरेक्ट टाइम विद द लोकेलिटी, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ हेल्थ स्कोर, whether there is significant difference between the health score when we interact, we mix effect. You can say the mix effect. Mix effect, that means locality and monthly income का mix effect जो check कर रहे हैं. ठीक है. So how will do this? So here 3 hypotheses will be stated. One, and we want to check income growth, locality, and interaction or mix effect of locality with the health monthly income. So first hypothesis is the earlier problem like that we stated. There is no any significant difference between mean health score of people with respect to the monthly income. Second one is the beta 1, beta 2, beta 3. That means mean health score of people belonging to different locality are same, versus this one they are not same. At least any 2 locality are not same with respect to the health score. And third one, health score is not affected by the interaction between income and locality. That means when we want to observe mixed effect of locality with income group, there is no effect of mixed effect, versus there are some effect. So all these 3 hypotheses will be tested here. So here same data file I opened.
Now analyze now general linear model for 2 ANOVA and univariate, again select the univariate, and dependent variable is the health score. Move this here. Now fixed factors are, there are 2 fixed factors. One is the monthly income, okay. Another one is the locality of residence. There are 4 locality A, B, C, D, okay. And here full factorial and plots, you can select plots for monthly income and locality and add, you can like this, do like this. Post hoc for monthly income and locality you can select, and for multiple comparison again we will select the Tukey test for multiple comparison here, continue, and then select option, skip all others options, just take the options, and here select descriptive statistics and homogeneity test, you can select like this, and continue, and okay. So first table shows the descriptive statistics, that is in different income groups mean health of people are given below 5,000 group, cross table, this is cross tabulation, below 5,000 group locality 1, mean is this 34, similarly below if income group is 5,000 locality 2, so mean is 25, like that, this is tabulated like that, this is called a cross tabulation. And after that Levin's test for equality of variance is given, that means if you observe p value here 0.310, that means it is greater than 0.05, that means H naught will be accepted, that means variances are equal, so other assumption is also satisfied. Now come on to the third table. Overall significance of the model is shown here, and here we are interested with MI, that is monthly income, locality, and third one monthly income cross locality, interaction effect, that is mix effect. So against monthly income p value is 0.002, that means it is less than 0.05, that means there is significant difference between mean health score belonging to 4 income group. अभी हम लोगों ने ऊपर करके देख भी लिया था, but when we see value against the locality, this is 0.397, that means here H naught will be accepted, there is no significant difference between mean health score of people belonging to different locality. Locality wise अगर हम compare कर रहे हैं, there is no significant difference. And when we check for the interaction effect, that mix effect, so here p value is also 0.320, that means and H naught will be accepted here. H naught, I stated that there is no effect of, and there is no interaction effect, there is no mix effect, so under H naught this will be accepted, there is no mix effect. So only significance difference due to monthly income, but not due to locality and interaction effect. So other table can be interpreted like this. Multiple comparison, I already explained how to compare different income groups. So subsets are also formed here. First group was different from the second, third and fourth, and second, third and fourth are same. But when we go for the locality wise comparison, you can observe locality, when we compare locality 1 with locality 2, p value is 0.960, that means p value is greater than alpha, that means locality 1 and locality 2 are same. Again if we check locality 1 with locality 3, then again p value is 0.760, both are same. Similarly locality 1 is and locality 4 are same, so locality 1, 2, 1, 3, 1, 4 are same. Now we compare locality 2 with locality 3 and locality 4. When we compare locality 2 with locality 3, so p value is again 0.933, yani locality 2 and locality 3 are same, and locality 2 and locality 4 are also same, because p value is exactly 1, the probability maximum value. Okay. Now we compare locality 3 with locality 4. So when we compare locality 3 with locality 4, p value is 0.962. That means again
locality 3 and locality 4 are also same. So all the 4 groups are same with respect to the mean health score. That's why our H naught was accepted here. हमने शुरू में ही बता दिया था H naught accepted था. That means all the 4 groups are same. इसीलिए मल्टीपल कंपैरिजन में भी आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया. तो यहाँ सबसेट जो बना है आप देखिए सारे के सारे एक ही ग्रुप में लिखे गए हैं यहाँ पर. दैट मीन्स ऑल द ग्रुप्स आर सेम. अगर कोई डिफरेंट होता है तो दूसरा सबसेट बनता है यहाँ पर. So in this way you can perform the two-way analysis of variance or comparing mean when data is classified in two ways. Or two-way classified data analysis of two-way classified data you can say. अच्छा अब यहाँ पर कुछ हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पहले डिस्कस कर लें. देन आई विल कम ऑन टू द कोरिलेशन एनालिसिस एंड सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस. क्योंकि आपके प्रॉब्लम्स में जो प्रॉब्लम आप ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको पहले डिस्कस कर लो तो ज़्यादा अच्छा होगा. जैसे कि काई स्क्वायर टेस्ट हम डिस्कस करना चाह रहे हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में. मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज द काई स्क्वायर टेस्ट फॉर कंपेरिजन ऑफ प्रोपोर्शन. अभी हम लोगों ने क्या किया, कंपेरिजन ऑफ मीन्स किया. बट समटाइम व्हेन डेटा इन द फॉर्म ऑफ कैटेगरिकल डेटा तो मीन्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड. अब आपका जैसे कैटेगरिकल डाटा है, जैसे कि ये था कि लोकेलिटी था 1 2 3 4. अब लोकेलिटी ए बी सी का अगर मीन निकाले कंपैरिजन करेंगे तो वो रिजल्ट थोड़ी हो सकता है, क्योंकि आपने कोडिंग की है ना, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं. तो इन 4 ग्रुप्स को कंपेयर करेंगे, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू प्रोपोर्शन. पीपल बिलोंगिंग टू द 4 ग्रुप्स आर सेम और नॉट, यानी प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू 4 लोकेलिटी आर सेम और नॉट, है ना. जैसे प्रोपोर्शन P2, P3, P4, या people belonging to the 4 income group are same or not with respect proportion of people belonging to the 4 income group are same or not. या अगर एग्जांपल और इस तरह से लें, दूसरा एक बास्केट है, डिफरेंट फ्रूट्स उसमें है, तो proportion of fruits in that basket are same or not. P1, P2, P3, P4, 4 types of fruits are there in that basket. So ये chi square test basically that is the non parametric test. तो हम पहले chi square का टेस्ट देखते हैं इसमें क्या है. I just listed some non-parametric tests here, and one of the tests are binomial test. फिर इसका chi-square test होता है for single proportion, for comparison of two proportion, for comparison of more than two proportion, and this binomial test is also for the proportion. तो सपोज करिए जैसे कि आपको प्रॉब्लम है कि जैसे जो हेल्थ डेटा फाइल था, किसी का स्टेटमेंट है इन दिस लोकेलिटी proportion of male there are more than 50% males in this population. प्रॉब्लम समझ गए क्या है? प्रॉब्लम किसी का क्लेम है कि इन दिस लोकेलिटी मोर देन 50%, ये प्रॉब्लम आपको टेस्ट करना है, या मोर देन 50% आर फीमेल, ये प्रॉब्लम आपको टेस्ट करना है. तो अंडर एच नॉट व्हाट विल राइट हियर, अंडर एच नॉट विल राइट P, capital P, that is population proportion. We generally denote capital for the population and small for the sample. So capital P will be equal to 50%. That means population proportion is 50%. Versus that H naught will write P is greater than 50%. That means whatever we just observed in that population, or someone that more than 50% are male here, so we can say 50%. Okay. So this can be performed using the binomial test. And here we can say like this: not equal to, greater than 50, and less than 50%. So here problem is stated like that: proportion of female differs significantly from the 50%. Problem can also be stated like that: population of female is less than 50%, greater than 50%, or not equal to 50%. तो पहले हम डेटा फाइल खोल लें.
ठीक है। सो ये एक सेकंड, दूसरा लीजिए, जस्ट मिनट। Okay, so here select analyze, then see here non-parametric test, and then here select binomial. Select binomial. Test variable is gender. Move gender. And test proportion is 50. Already I stated 50% or greater than less than 50%. And here click on OK. And here you can select option descriptive and quartiles. No need to select anything here. Just click on OK. So see here, significant value test proportion is 50 and significant value is 0.690. That means under H0 we stated that P is equal to 50% versus H1 P is greater than or less than or whatever you stated there. But here in our case H0 will be accepted. That means proportion of male and female are 50%. That means in that population proportion of male and female are same, 50-50% like that. So female test you can test the proportion of male or female like that. Another problem is here. Chi-square test for single, and here इसको नहीं करना, सेम चेक कर सकते हैं ऐसे जो है। अब जैसे कि यहाँ पर अगर जाएं, यहाँ पर यूजिंग द इंस्टेड ऑफ यूजिंग बाइनोमियल टेस्ट वी कैन यूज द chi-square टेस्ट फॉर testing the equality of proportion, 50% male, 50% female, or you can say the male proportion is greater than female proportion like that. So here analyze and select non-parametric test and then chi-square, and here test variable is gender now, and here all categories are equal. That means 50% male, 50% female. अब यहाँ पर आप प्रॉब्लम को दूसरे तरह से भी स्टेट कर सकते हैं. सपोज यू क्लेम 60% male in this population, 60% male in this population, there is a claim. So under H0 it will be written, or someone can state more than 60% like that. So under H0 less than, ठीक है. तो मेल एंड फीमेल करें, मेल 40%, अगर मेल पॉपुलेशन मोर देन 60% है, 60% मेल हो पहले हो गया, फीमेल 40% हो गया. तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इक्वल इक्वल का है तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर एज इट इज छोड़ देंगे, ऑल कैटेगरीज आर इक्वल. बट व्हेन यू क्लेम लाइक दैट 60 and 40, so select here values, then type here 0.60, that is 60%, and add here, then type 0.40, then again add here. So 60 and 40%. Okay, and then okay. Here significant value is 0.83. Now chi-square test for equality of more than two proportions. So here problem is stated like that, if the proportion of people belonging to the different income group are same or not. तो सेम जैसे अभी 2 पॉपुलेशन के लिए कर रहे हैं, मोर देन 2 पॉपुलेशन के लिए करेंगे. अब यहाँ पर टेस्ट वेरिएबल क्या है, हमारा इनकम ग्रुप है. पीपल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट इनकम ग्रुप आर सेम और नॉट. ठीक है. तो अब यहाँ पर देखिए ये कर लेंगे,
एनालाइज नॉन पैरामेट्रिक, कहाँ गया नॉन पैरामेट्रिक, एंड काई स्क्वायर, और इसे रीसेट कर दें। अब यहाँ टेस्ट वेरिएबल आपका क्या होगा, इनकम ग्रुप। पहला तो अगर ये टेस्ट कर रहे हैं पीपल बिलोंगिंग टू द फोर इनकम ग्रुप्स आर सेम और नॉट, तो ये तो पहला वाला ऑप्शन आपका ठीक है, ऑल ग्रुप्स आर इक्वल। लेकिन अगर आपका कोई ऑप्शन है जैसे कि इनकम ग्रुप जो है, जैसे कि प्रॉब्लम मैंने स्टेट किया यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 4:3:2:1, तो उसी ऑर्डर में लिखा जाएगा 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 like this. But here if you stated your null hypothesis like that, there is some significant difference between the proportion of people belonging to different income groups or not. So under H0, P1 is equal to P2 is equal to P3 is equal to P4 versus H1, they are not same. Okay. So here, check here, all categories are equal and okay. So P value is in this case. तो इस तरह से हम प्रोपोर्शन टेस्ट कर सकते हैं। Now test for independence of attributes. Suppose sometime we want to test is there any association between two attributes or not. Suppose literacy and income group दो एट्रीब्यूट हैं, यहाँ पर हमने लिया है लोकेलिटी एंड इनकम ग्रुप, मंथली इनकम। तो क्या जो लोकेलिटी ए के लोगों के इनकम ज्यादा है लोकेलिटी बी के, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन लोकेलिटी एंड इनकम ग्रुप? सो यू वांट टू चेक इंडिपेंडेंस ऑफ लोकेलिटी ऑन इनकम, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं थ्रू काई स्क्वायर। अब इसे कैसे करेंगे? अब यहाँ पर काई स्क्वायर नॉन पैरामेट्रिक्स में ना लेके यहाँ पर लेंगे काई एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड देन डिस्क्रिप्टिव। एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड क्रॉस टैब, नॉट डिस्क्रिप्टिव, क्रॉस टैब, क्रॉस टेबुलेशन, ठीक है। तो सिलेक्ट क्रॉस टैब and if you can move any variable in the row, another variable in the column. So there are two variables, you want to check the association between these two variables, attributes. So locality and monthly income. So locality can be moved in the row like this and monthly income can be moved in the column, okay, like this. So after moving these two variables to window, here nothing is to be done here. Click on statistics and see here there is the option chi-square. Click on chi-square and then continue. Now click on cells. Observed frequency will be displayed in the chi-square table and the contingency table. You can also display the expected frequency. If you click on expected frequency, then observed and expected frequency will be displayed in the table. Continue and then okay. You can also display the cluster bar chart. So see here, this is the cross tabulation. In one side monthly income and another side locality of residence, and cross tabulation is given here. And here this is the actual frequency and below that expected frequencies are written. Suppose count is 1, that means actual frequency is 1, expected frequency is 0.8 is given. Similarly here 2 is given, actual frequency and expected frequency using chi-square is 1.7. But we are concerned with the chi-square test table. Here p value is, we'll see the first row, Pearson chi-square test, and p value is 0.632. That means again if you see this p value is greater than 0.05. So under H0, how will state our hypothesis in this case? H0 will write there is no association between locality and monthly income, or monthly income does not depend on the locality.
So, or both are independent. Monthly income and locality are independent. Versus H1, there are some association between locality and monthly income. But in our case, what we observe, p value is greater than alpha. That means locality and monthly income are independent. There is no any relation between the locality and monthly income. So in this way, you can check the association of two attributes. And this is the cluster bar diagram for locality A. The monthly in count, how many people are from locality A, B, C are given. So these are also displayed here. Next one is the run test for randomness. One of the assumptions in our parametric test like this. Now analyze, okay, non-parametric test and run test. Okay, test variable is age. Suppose I consider age here. Age. Okay, and cut point is median. From median, we check the randomness. See here. Not will versus H. So here we want to accept null hypothesis, because under null hypothesis here we stated that test variable age is random versus H1 it is. But so here p value is 0.993, that means H naught will be accepted. So age variable will be the random. So our condition will be met here. हमारा कंडीशन यही है ना कि ऑब्जर्वेशन शुड बी रैंडमली टेकन. तो एज वेरिएबल जो हमने कंसीडर किया दैट इज रैंडमली टेकन. ऑब्जर्वेशन अंडर एज वेरिएबल इज रैंडम. So here in this way you can check the randomness. So these are some non-parametric test. अभी और भी है, अगर उसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि दूसरी चीजें डिस्कस करने टाइम बहुत कम बचा है. Basically, just I want to discuss correlation analysis and simple linear regression analysis. अब देखिए correlation analysis, most of the time you calculate the correlation between two variables. और ये x का I observed that स्टूडेंट से correlation ऐसे निकाला कि वो independent variable है, they tried to calculate correlation between that. So obviously correlation is zero. अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जैसे IQ है और वेट है, तो आपको क्या लगता है दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो है? किसी के IQ से किसी वेट से किसी का IQ का कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि 0.0000 देर में भी it will be approaching to zero. Correlation will be zero like that. By same करना है, ठीक है. So there are some assumptions regarding correlation analysis. Data should be quantitative data होना चाहिए. अगर qualitative होगा तो Spearman, ये rank correlation Spearman और कार्ल पियर्सन दो तरह के कैलकुलेट करते हैं.
correlation coefficient is more powerful than the rank correlation, SPSS correlation. So basic coefficient of correlation is that be quantitative, distribution of variable should be normal. तो वो हम शुरू से करते आ रहे हैं कि क्वांटिटेटिव भी देख रहे हैं, नॉर्मलिटी भी चेक कर रहे हैं. लीनियरशिप रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, रिलेशनशिप शुड बी लीनियर, यानी एक ही चाहे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो चाहे अपवर्ड डायरेक्शन में हो, रिलेशनशिप शुड बी लीनियर. लीनियर कर्व लीनियर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर दूसरा मेथड है. एंड ऑल ऑब्जर्वेशन शुड बी इंडिपेंडेंट, ऑब्जर्वेशन शुड बी टेकन रैंडमली और इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड. और इसी तरह स्पीयरमैन है एंड केंडल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स है, वहां पर क्वालिटेटिव डेटा के लिए कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव डेटा के लिए हम इस कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूज करते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन अगर नॉर्मल नहीं है आपने चेक किया नॉर्मल नहीं है, तो आप स्पीयरमैन पर जाएंगे फिर. एंड व्हेन डेटा कंटेन सम आउटलायर्स, तो वहां पर हम नॉर्मलिटी सिचुएशन जो है डिस्टर्ब होगी तो हम स्पीयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अप्लाई करेंगे. सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम जो है सकते हैं कि रिलेशनशिप लीनियर है कि नहीं. तो यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है, सपोज रेफर टू योर हेल्थ डेटा एंड परफॉर्म द फॉलोइंग यूजिंग SPSS एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट. फर्स्ट पार्ट इज ग्राफ द डेटा ऑन स्कैटर प्लॉट एंड डिटरमिन इफ देयर इज अ पॉसिबल लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड हेल्थ स्कोर. एज और हेल्थ स्कोर, सेम इंडिविजुअल का एज भी ले रहे हैं, हेल्थ ले रहे हैं, और कोरिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे. पहले लीनियर रिलेशनशिप देख रहे हैं कि है कि नहीं, और फिर सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे, और उस कोरिलेशन कोएफिशिएंट वेदर दिस कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज सिग्निफिकेंट और नॉट. अभी आप देखेंगे वो सैंपल में देख रहे हैं ना, whether this correlation is also existing in that population or not, where from where this sample is to be taken. ठीक है, और from where this sample is taken. ठीक, तो पहले क्या करेंगे, हम प्लॉट करेंगे और पैटर्न देखेंगे क्या है. ग्राफ ऑफ लीजिए डायलॉग और स्कैटर प्लॉट यहाँ पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं. ठीक, सिंपल स्कैटर प्लॉट डिफाइन. ऑन एक्स एक्सिस सपोज आपने लिया एज ऑफ द पर्सन, वाई एक्सिस पर ले रहे हैं हेल्थ स्कोर, एंड ओके. तो देखिए पैटर्न कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बट लीनियर पैटर्न. अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी फिट कर सकते हैं, आप डबल क्लिक करके. तो पैटर्न देखिए लीनियर पैटर्न आ रहा, कुछ कर्व लीनियर नहीं है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ रही हेल्थ स्कोर डाउन हो रहा है जो है. ठीक है, ये रियल डेटा नहीं है, बिकॉज एज के साथ जो हेल्थ स्कोर कर्व लीनियर होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल एज पर हेल्थ स्कोर कम होगा, यंग एकदम होगा तो हेल्थ स्कोर सबसे अच्छा होगा, फिर एक एज के साथ डाउनवर्ड होने लगेगा, तो कर्व लीनियर होना चाहिए. बट हियर whatever values we considered here, that shows the downward tendency, that is the linearship relation have in downward direction. So correlation analysis can be performed. Now what we'll do here, analyze and see here correlate and then bivariate. Okay, so you want to get the correlationship between age and health score. So move the age here, age and health score here. Okay, age and health score, and then okay. Options में भी आप देख सकते हैं, कुछ नहीं लेना है आपको. See here, correlationship between age of the person and health score is given here. This is the value minus 0.678. Correlation always lying between -1 to +1. Two variables are, if it is near correlation, that means there is an increase in one variable, there is a decrease in another variable. If value is +1, that means there is a perfect negative correlation. जिस proportion में x वेरिएबल बढ़ रहा है उसी proportion में y भी बढ़ रहा है.
और -1 में जिस प्रोपोर्शन में x बढ़ रहा उसी प्रोपोर्शन y कम हो रहा, ठीक है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. एंड वी मे फ्रेम द थंब रूल, so if value of correlation near like more than 0.6 to plus 0.6, 0.9, either in the negative 0, that means minus 0.1 to plus 0.1, 0.9 plus 0.2, like that. So accordingly we can interpret like this. And here you can see correlation between age of the person and health score is minus 0.678. That is moderate correlation, you can say. And p value is 0.000. So this is the p value, and under H naught here relationship between. So here p value is 0.000. That means H naught will be rejected. That means there is some between age and health score. So we observe here there is some correlation, negative correlation between age and health score. That is also true in the population. This correlation is value is significant. Okay, so this is simple correlation. Next is the partial correlation. Partial correlation. Partial correlation here, suppose while we consider problem like that, suppose we want to find the correlationship between health score and personality score controlling the effect of age. So how I'll do like this. So under age, no correlation versus some correlation. Effect of personality score on health on personality after controlling the effect of age. So command will be like this: analyze and compare, correlate, and see here there is an option partial. And if you want to get the correlationship between health, health score and personality score controlling the effect of age. So health score here, personality score again move here, and controlling the effect of age. Okay. So then okay. So this is the partial, and relationship between health score and personality score is insignificant.
because there is very weak correlation. So age does not affect the personality score on relationship between personality score and activity score. There is no effect of age on personality score. Okay. So in this partial correlation analysis, it's the same problem. Fertilization में age that is तो दो के बीच में निकाल रहे थे कंट्रोल सिंगल ज्वाइंट वेरिएबल्स correlation. अभी परमिट करेगा क्या कुछ कि दूसरे स्पीकर आ गए हैं? चलिए तो मैं क्लोज करता हूं यहां पर. एनी क्वेश्चन? We would now like to open the house for the question and answers. Please switch the screen for the online participants. Any query from the offline participants? अभी कोई प्रॉब्लम जो मैं डिस्कस देखो ऐसा कि ये सारी चीजें ज्यादा फायदा होता नहीं इससे, फ्रेंकली स्पीकिंग. जैसे कि मैंने आपको एक प्रोसीजर बताया और ये कम से कम 3 घंटे 2 घंटे का वर्कशॉप रोज जैसे SPSS पे हो रहा है. मान लीजिए टी टेस्ट से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम आपको बताया, हमने डेमोन्स्ट्रेट किया हाउ टू टेस्ट. तो अब आप कंप्यूटर बैठ के उसको अपने से करें तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा. फिर दूसरा उसके बाद हम ये करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज देते हैं अपने से करने के लिए. फिर उसको जब आप करते हैं तो आपको एकदम क्लियर हो जाता है. तो ये देखो मैं कोशिश ये करूँगा, अगर ये हो सका तो मैं अपनी यहाँ वर्कशॉप इस तरह रखूँगा, लेकिन वो लिमिटेड होगा 30 पार्टिसिपेंट्स और 25 पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर 30 और 25 कंप्यूटर से जो रनिंग कंडीशन में है जिसका SPSS कोड है, तो बैचेस में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. एक बार मैंने किया था तो 8 बैचेस में हमने किया था, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए थे. तो यू मे लर्न लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट वर्कशॉप. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir, for sharing your knowledge with us. Now we will take a short break of 15 minutes. We will resume here at 5:50. Online participants are requested to join the link with to join the meet with the same link, as we are going to start the next session after 15 minutes.